Hello, dear learners. This is Dr. Upasana Sharma, and today I'm going to start with a new video lecture series related to your course Teaching of English or Pedagogy of English. This particular video is going to be very beneficial for all those students who are aspiring for TET, CTET, and those who have opted for English as their teaching subject in their B.Ed and D.El course. In this particular video, I will be covering mainly three topics. First of all, meaning of language. Secondly, nature of language. And third topic will be characteristic of language. Dear learners, आने वाले दिनों में और भी वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करूंगी और उन सारे वीडियोस में हम बारी बारी से सारे के सारे टॉपिक्स जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश या पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के अंडर आपको पढ़ने हैं उन सब पे डिटेल वीडियोस आपको मिलेंगे. So stay connected. So let us start with our first topic, that is meaning of language. Dear learners, as you all know, language is a means or verbal medium for expression or communicating ideas, feelings, experiences and realization. लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को कम्युनिकेट करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं. एज यू ऑल नो, लैंग्वेज इज गॉड्स स्पेशल गिफ्ट टू मैनकाइंड. सिर्फ ह्यूमंस को ही ये एक स्पेशल गिफ्ट मिली है गॉड की तरफ से. विदाउट लैंग्वेज, ह्यूमन सिविलाइजेशन एज वी नो इट टुडे, it would have remained an impossibility, because without language man would have remained only a dumb animal. So it is only that ability to communicate through words that makes us different from animals. हम लैंग्वेज को हर जगह यूज़ करते हैं, वो चाहे हमारे थॉट्स हैं, ड्रीम्स हैं, प्रेयर्स हैं, मेडिटेशन है, रिलेशंस है या फिर कम्युनिकेशन है. इट इज़ something which enables us to think, feel, judge, communicate, and it acts as a tool for sharing experiences among individuals. So we can say, besides being a means of communication, जो language है, it is also a storehouse of knowledge. It is an instrument of thinking as well. So language is very important for all of us. Dear learners, let's see some definitions given by different thinkers. First definition is by Henry Sweet. According to Henry Sweet, language is the expression of thought by means of speech sounds. And Hall says that language is the institution whereby humans communicate and interact with each other by means of habitually used oral, auditory, arbitrary symbols. कि ऐसे सिंबल्स जिनको हम ओरली बोलते हैं और सुनते हैं, आर्बिट्ररी होते हैं वो नेचर में. आर्बिट्ररी मीन्स जिनके पीछे कोई बेसिक प्रिंसिपल नहीं होता. सो उन्हीं सब ओरल, ऑडिटरी, आर्बिट्ररी सिंबल्स के यूज से जब हम अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ, दैट इज लैंग्वेज. Another definition is given by Wardo. Wardo says a language is a system of arbitrary vocal symbols used for human communication. Another definition by Block and Trager. A language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group uh, um cooperates. So we can say that language is used to give expression of thoughts and feelings of a social group. As you all know, man is a social being and he wants to interact with his own views and ideas with others. He wants to communicate his ideas with others. So language is used for the verbal interaction. It is verbal as well as non-verbal. Non-verbal language जो होती है, it is also known as body language or silent language. But जब हमें अपने ideas को communicate करना पड़ता है, verbally करना होता है, जब हमें अपने ideas को communicate, तो हम language का use करते हैं. तो we can say language is a means or vehicle for communicating ideas, thoughts, feelings, experiences, and emotions. Dear learners, let us discuss nature of language. As we all know, language requires four skills: listening, speaking, reading, and writing.
इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं लैंग्वेज में, लैंग्वेज इज कंसर्न्ड विद लेटर्स, देन लेटर्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स के बाद हमारे पास जो अगली चीज़ आती है दैट इज वर्ड्स, एंड आफ्टर दैट sentences or structures. So letters plus words give rise to sentences. And the accuracy of language depends upon the knowledge of grammar, correct pronunciation, correct spellings, correct reading and listening. If we talk about its nature, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं. सबसे पहले लैंग्वेज इज लर्नड, इट इज़ अ सिस्टम, it is a system of systems, it is a system of symbols. All the symbols of language are vocal, symbols are arbitrary, language is always related to the culture of a society, it always changes, it is dynamic, language is species specific, language is unique. Now, learners, let us talk about all these points in detail. Dear learners, the first point that we have is language is learned, which means language is a learned property. It is in no way an automatic process, but it is learned. When a child is born, he knows no language. And जो parents होते हैं, they are conscious of this process and they help their child to imitate their spoken words. So the child has to learn it over a long period of time. He is exposed to variety of sounds by whatever sounds he get around him, and he begins a learning of language by making various isolated sounds like we have papa, dada and baba. तो बहुत सारी साउंड है जो एक बच्चा शुरू में इमिटेट करता है और उनको प्रैक्टिस करता है और बार बार बोलता है. तो लैंग्वेज लर्निंग जो है इट इज़ अ बिहेवियर, बट इट इज़ नॉट टाइप ऑफ बिहेवियर लाइक वॉकिंग एंड क्रॉलिंग. वॉकिंग और क्रॉलिंग जो है दैट कम्स टू अ चाइल्ड इन अ नेचुरल वे, बट लैंग्वेज जो है इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इमिटेशन एंड प्रैक्टिस. बच्चा इमिटेट करता है सराउंडिंग में जो भी वो साउंड सुनता है या सेंटेंसेस सुनता है, वो उनको इमिटेट करता है, प्रैक्टिस करता है. सो लैंग्वेज इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एफर्ट. सो वी कैन से इट इज़ अ लर्नड प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट इनहेरेंट या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी. इसको ये बच्चे के अंदर बाय बर्थ नहीं होती, वो उसको लैंग्वेज जो है वो सीखनी ही पड़ती है. देन अनदर पॉइंट इज लैंग्वेज इज अ सिस्टम. डियर लर्नर्स, लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स होल लाइक द ह्यूमन बॉडी. जैसे हमारी बॉडी होती है, द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी फंक्शंस थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक वी हैव हार्ट, वी हैव लंग्स, वी हैव liver, we have brain, we have ears, eyes. So these different organs are interconnected and they work in coordination. So similarly, the system of language functions through three things. First is sounds, another one is we have words and sentences. So learners, these are integrated with one another and they constitute the complex organic whole which is called as language. So we can say language is a unique system. The sound system of different languages is also different. That means the sound system of language differs from language to language depending upon the culture to which a language belongs. So every language is systematic and it is unique. Now we will go to next point, that is the third point, that is language is a system of systems. Dear learners, each language is a system of systems. There are phonological and grammatical systems in all the languages, and there are some subsystems within the language also. So, the phonology of a language forms its own system
as the various sounds function in a systematic way. Dear learners, as I have told you before, that language consists of three things. One is sounds, another one is words, then third one is sentences or structures. So, study of sounds is called as phonology. Study of words is called as morphology. Morphology. You can note down all these things. Then study of sentences is called as syntax. तो हम देख सकते हैं कि there are several subsystems within a language, and it is that's why it is called as system of systems. There are systems working under systems. Then we will go to next point now, that is language is a system of symbols. Dear students, each language works through symbols. Different words used in the language are the symbols. हम जब भी किसी से interact करते हैं, communicate करते हैं, we make use of words, and all those words are the symbols of a language. They stand for certain things. जैसे मैं कहूँ कि this is a pen, तो पेन जो वर्ड है वो भी किसी शब्द के लिए बना है. इट स्टैंड फॉर समथिंग. इट ऑल्सो स्टैंड फॉर समथिंग. और वेरियस सेंटेंसेस में जो डिफरेंट वर्ड हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर थिंग को इंडिकेट करते हैं. सो लैंग्वेज फंक्शंस वेल व्हेन its symbols are known both to the speaker and the person for whom they are being used. तो दोनों को ही, चाहे वो स्पीकर जो बोल रहा है और जो पर्सन उसको सुन रहा है, उन दोनों को ही सिंबल्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी एक लैंग्वेज जो है वो अच्छे से फंक्शन करती है. तो लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स. लाइक इसी सेंटेंस की बात कर लेते हैं. लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स. देयर आर वेराइटी ऑफ वर्ड्स, वेराइटी ऑफ सिंबल्स प्रेजेंट इन दिस sentence, and it is conveying some meaning. The next point is symbols of language are vocal in nature. That means every language works through symbols. अभी अभी हमने डिस्कस किया कि there are variety of symbols and all the words of a language are called as symbols. So all these symbols are vocal in nature. मतलब all the symbols are used in speech. They are primarily used in speech. Only speech provides all essential signals of a language. There are other kind of symbols also जिनको हम कहते हैं vocal symbols. For example, gestures, signal flags, they all are visual symbols. Then we have ringing of bell and beating of drum. ये कैसा symbol है? It is an auditory symbol. So these auditory symbol and visual symbols, they do not form any language. In language, sounds are produced through vocal organs. So जो speech होती है, it is the basic form of language, and a language without speech is unthinkable. So we can say that a language system does not exist in a vacuum. It needs to be vocal. जब हम स्पीच के थ्रू डिफरेंट सिंबल्स को यूज करते हैं, तभी दूसरे इंसान को हमारी बात समझ में आती है. तो सिंबल्स आर वोकल इन नेचर. नाउ लेट्स मूव टू another point, that is symbols of language are arbitrary. Dear learners, जो वर्ड है arbitrary, इसका मतलब होता है not based on any principle. Not based on any principle. अब इसका क्या मतलब है? Arbitrary symbol से हमारा मतलब है कि there is no visual relationship between the language item and the object for which it stands. For example, we have a word here called as tree. तो ये जो tree है, क्या ये
ट्री जैसा दिखता है, ऐसा कुछ ऐसा नजर आता है? नो, ट्री वर्ड ऐसे ट्री जैसा नहीं दिखता. That means there is no visual relationship between the language item. The language item here is this word tree, and there is no visual relationship between this language item and the object for it stand. तो यहाँ ऑब्जेक्ट है ट्री, ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है, और जो हमारा वर्ड है लैंग्वेज आइटम है वो ये है TREE. तो ये TREE जिसको हम ट्री कहते हैं, ये ट्री जैसा नहीं दिखता, इनमें कोई विजुअल सिमिलैरिटी नहीं है. दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अ मैन. अ मैन इज कॉल्ड मैन ट्रेडिशनली. देर इज नो विजुअल सिमिलैरिटी बिटवीन द सिंबल मैन एंड द एक्चुअल मैन. एक एक्चुअल जो इंसान होता है, मैन होता है, वो इस जो सिंबल जिससे हम डिपिक्ट करते हैं मैन वर्ड को, एम मैन, ये वर्ड मैन जैसा नहीं दिखता, ये सिर्फ इसको इंडिकेट कर रहा है. सो we have not named it so on the basis of some logic or scientific principle. There is no scientific principle behind calling a tree as tree or calling a man as man. There is no visual similarity between the symbol and the actual object. So I hope it is clear that symbols of language are arbitrary in nature. Now, next point that we are going to discuss is language is related to the culture of society, which means every language is related to culture of society to which it belongs, and the culture of the people naturally influences the language. Every language is product of society. Dear learners, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी से रिलेटेड ही हमेशा लैंग्वेज रहती है, या फिर जो हमारा कल्चर है जिसमें हम लोग रहते हैं, इट ऑलवेज इन्फ्लुएंसेस द लैंग्वेज. सो एवरी लैंग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी. हम वही वर्ड यूज़ करते हैं जो सोसाइटी में प्रिवेलिंग होती है, कंडीशंस, नीड्स, या लोगों के साथ हमारा जो बिहेवियर रहता है, उसी से एक लैंग्वेज ओरिजिनेट होती है. सो इट हैज़ मीनिंग ओनली इन रिलेशन टू दैट सोसाइटी एंड कल्चर. एक सोसाइटी में यूज़ होने वाले वर्ड्स का, सेंटेंसेस का रिलेशन या मीनिंग उसी सोसाइटी के अंदर के लोगों को ही के लिए ही इम्पॉर्टेंट होता है, या वी कैन से कि उसका मीनिंग सिर्फ उसी सोसाइटी और कल्चर तक सीमित रहता है. सो नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज इज स्पीशीज स्पेसिफिक. अब इसका क्या मतलब है? लैंग्वेज इज स्पीशीज स्पेसिफिक. Only human beings have been gifted with this thing called language. It is the divine gift given by God to all of us. So इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग कम्युनिकेट करते हैं. बहुत सारी स्पीशीज और भी हैं which do communicate, but only human beings can make use of language. वो अलग अलग चीज़ों से कम्युनिकेट कर सकती हैं दूसरी स्पीशीज, बट जो लैंग्वेज नाम की चीज़ है वो सिर्फ हमें तक सीमित है, सिर्फ हमें ही मिली है. तो इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक. देन वी हैव another point, that is language changes. Yes, we live in a changing world, and with the needs and requirements of the speakers, a language always changes. It is changing constantly according to the needs of the society or the needs of the speakers. Then another point is language is unique. Yes, every language is unique because it has its own style of functioning. The sound, vocabulary, structure of every language have their own speciality. तो हर एक लैंग्वेज यूनिक होती है और उसकी अपनी एक स्पेशलिटी होती है. आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, we will discuss characteristics of language. There are variety of characteristics of any language. सबसे पहले तो language is a social process. Yes, language is a social process. Then language is imitative process. After that, it is continuously changing process. Then it is acquired property, not ancestral. There is no final form of language.
Every language has a standard form. The structure of each language is different from the other language. Then it is traditional and the person can acquire it, cannot generate it. एक पर्सन लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है. लैंग्वेज develops from gross to subtle and from immaturity to maturity. Now let us discuss all these points one by one. Language is a social process, which means language is not a cultural property or any divine property. It is a product of human mind in the social environment. इसका मतलब है कि जो लैंग्वेज है ये कल्चरल प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक ह्यूमन माइंड का प्रोडक्ट है जो उसने कहाँ बनाया, सोशल एनवायरनमेंट में. डियर लर्नर्स, अ लैंग्वेज इज born, developed, acquired and used in a social environment. So we can say it is relative to society. As man is a free social animal and language is his creation, so we can say language is a social process. सोसाइटी में एक इंडिविजुअल अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है ताकि वो दूसरे लोगों के साथ हार्मनी में रह सके, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके. सो इट इज़ अ सोशल प्रोसेस. नाउ सेकंड पॉइंट इज इट इज़ एन इमिटेटिव प्रोसेस. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि व्हेन अ चाइल्ड इज born he doesn't know any language. He just acquire the language through imitation and constant the continuous practice. So language is learned by imitation, and this process itself is a major force of changeability of language, or in other words, development. A child tries to speak for himself by listening to the behavior of the language from the parents, siblings, relatives, and other society members. So it is a imitative process. A child learns through continuous imitation and practice. Then third characteristics of language is that language is a continuously changing process. ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज एक एक जैसी रहती है, वो बदलती रहती है. जितने भी चेंजेस हम देख सकते हैं एक लैंग्वेज के अंदर, उनको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक चेंजेस, एंड दे कैन अकर एट ऑल लेवल्स ऑफ साउंड्स, वर्ड्स, phrases and sentences. But this change is so indirect, and so it often happens that their address is not immediately known. Continuously change आता रहता है because every language has a history, and in the human culture, changes are constantly taking place in the course of the learned transmission of languages from one generation to another generation. So language changes in all their aspects, in their pronunciation, word form, syntax and word meanings. So we can say it is continuously changing process. We will go to the next point, that is language is acquired property, not ancestral. Yes, the human child does not come from the mother's womb by learning any language. हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो किसी लैंग्वेज के साथ नहीं आता. इट इज़ नॉट एन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, या फिर ये बाय बर्थ लैंग्वेज बच्चे के अंदर नहीं होती है. वो इमिटेशन और प्रैक्टिस से सीखता है, और ही और शी लर्न्स द लैंग्वेज from the speakers he is born in, or he is brought up, and the language he gets to hear is the same. So if the human community if kept apart, a child will not be able to learn any language. तो लोगों के बीच रह के, कम्युनिटी में रह के ही एक बच्चा लैंग्वेज को सीखता है, एक्वायर करता है, एवरीडे नए नए वर्ड सीखता है, सेंटेंसेस सीखता है अपनी सराउंडिंग से. तो हम कह सकते हैं language is an acquired property. It is not ancestral. The next point is there is no final form of language. जैसे कि हमने अभी अभी कहा कि language is ever changing, उसमें continuously change आते रहते हैं. So as a result of being relative to society, it is always moving towards development. Every language is growing, it is developing. Those languages which are not spoken, their final form is certain. क्योंकि जब वो बोली ही नहीं जा रही है, यूज़ में नहीं है, तो उनकी फाइनल फॉर्म ही एक वही रह जाती है जिस पे वो रुक गई. मतलब जब यूज़ नहीं हो रही, उससे पहले जो कुछ चेंजेस होने थे वो हो गए. अब इट इज़ देयर फाइनल फॉर्म.
बट इन लिविंग लैंग्वेजेस मतलब जो यूज में हैं, चल रही हैं, चेंज इज इनएविटेबल, उनमें हम चेंज को नहीं रोक सकते। और दिस इज द हॉलमार्क ऑफ अ लिविंग लैंग्वेज, कि जो लैंग्वेज ट्रेंड में होती है, जो यूज हो रही होती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। और जो भी लैंग्वेज पैटर्न एक सोसाइटी यूज कर रही होती है, तो लिविंग लैंग्वेजेस में चेंज आता रहता है। देयर इज नो फाइनल फॉर्म। I will go to the next point, that is every language has a standard form. Yes, dear learners, though the language is constantly changing, so it is even more natural to come across variations in the use of language, especially in a large plot. Due to this, differences are found not only in the pronunciation of their sounds in different parts, but also in the sentence structures. देखिए, एक लैंग्वेज जो है वो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, बट वेरियस एस्पेक्ट्स में भी बहुत सारे चेंजेस हम प्लेस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि जो साउंड्स की प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंट होती है, बट वी ऑलवेज हैव अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी लैंग्वेज, so we should use only that standard format or standard form of the language. Then another characteristic is the structure of each language is different from the other language, which means the structure of one language is different from the structure of another language at one or several levels in terms of sound, word, form, sentence and meaning, etc. It is this difference that separates one language from the another. तो डियर लर्नर्स, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है कि हर एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर अलग होता है, और वो जो पॉइंट्स हैं डिफरेंस के, वो कौन कौन से हैं? साउंड, वर्ड, फॉर्म, सेंटेंस एंड मीनिंग। नाउ let's go to another point, that is language is traditional and the person can acquire it but cannot generate it. It means the language has come from tradition and the person acquires that traditional language only in the society. हम जो भी लैंग्वेज हम बोलते हैं या सीखते हैं, वो हम सब एक्वायर करते हैं फ्रॉम द सोसाइटी। हम उसको जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम उसको सीख रहे हैं एज इट इज़, जैसी वो सोसाइटी में चल रही है। Then next point is language develops from gross to subtle and from immaturity to maturity, which means language in its early stage is not capable of expressing subtle feelings, and its vocabulary is also less and the structure is also loose. So because of this loose structure and less vocabulary, जो लैंग्वेज होती है वो शुरुआत में immature होती है, but in the due course of time the same language becomes rich. So we can say language develops from subtle, gross to subtle, and from immaturity to maturity. So we can say, students, in conclusion, we can say language is an important medium for communication and interaction to others. And language is not limited only for expressing and reflecting the facts and observations. It also reflects and expresses our attitude and behavior. So, in this video, we studied about meaning of language. We discussed its nature and various points of and the characteristics of language. So, dear students, stay connected with my channel and wait for some more interesting videos on this topic or related to your course, that is teaching of English. Thank you so much.